login page, then registration, then home page. Okay, and we know like last time we do three pages only. Okay, first one is login, second one is registration, third one is home page of your idea title. If you want. The best 3 frameworks will get a gift from Innoovatum. Okay? And along with the appreciation certificate. Shall we start? The rule is clear. 8 minutes, 1 minute for one frame. 1 minute for one frame. Draw the home page. No need to draw login registration page. It's very clear, right? Shall we start? Nikhil sir, you'll be telling like 1 minute, 1 minute, 1 minute, 1 minute. Okay? Start. We will proceed with the properties where we can edit the home pages or login pages. Now here in exactly at the middle थिंक क्या कि वो किस तरह मतलब अपना होम पेज बनाते हैं ताकि यूजर जिससे उनको इंटरेक्ट हो उसका एक्सपीरियंस अच्छा रहे उसको देख के लगना चाहिए कि हाँ ये वेबसाइट जो विजिट किया हूँ कुछ तो अच्छा होगा तो ऑन द बेसिस ऑफ what website I visited my got this. When you draw the first frame you want to shift it to the second frame. What is the transition in the mindset? Just to do different things from the previous. मतलब पहले से मतलब नेक्स्ट की थोड़ा चेंजेस करना चाहिए. मतलब एक पर्सन जो है मतलब कुछ भी अगर सर्च करने जाता है तो मल्टीपल वेबसाइट को मतलब विजिट करता ही है देखने के लिए किसमें अच्छा उसका एक्सपीरियंस मिलेगा. तो वही क्वेश्चन में था कि अगर मैं भी एज ए क्लाइंट एज ए यूजर अगर कोई अच्छा मतलब विजिट कर रहा हूँ तो मैं भी मतलब बेस्ड ऑन दी होम पेज डिजाइन मैं देख के अच्छा मतलब रिकग्नाइज कर सकता हूँ कि ये वाला बेटर होगा. पहले से बेटर होना चाहिए. हाँ पहले से बेटर होना चाहिए. थैंक्स फॉर गिविंग अप टू समवन. It was something that is mixed of pressure and excitement. It was just that if the first frame is difficult and the next frame should be easier than that and users should feel that yeah this is the easier way in what websites and homepages I have already visited. So it gives a user that it is not that complicated. During the emergency situation also, it should be like that, oh, it is easier to use. We can use this in minutes or in seconds. So that was the idea from shifting one frame to other frame. And about the experience, speaking some, it should be interactive, eye-catching. And focusing on what catches the users. So by this feature, इससे हमको ये समझ आया कि जो लोगोस टेक्स्ट वगैरह रहते हैं हम एग्जैक्ट प्लेसमेंट किधर करना कि यूजर का ध्यान किधर करना. एंड ये टेक्स्ट ज़्यादा यूज करने से थोड़े लोगों को पढ़ना आता है थोड़े लोगों को नहीं आता है. इंस्टेंट यूज एनिमेशन जिससे अगर हमको अपनी वीडियो का एनिमेशन लगता है